द रिपेयर 20 मंथ्स हो गए सर, 20 महीना हो गया। और फिर मैं ये भी सुना था पानी आएगा तो और पूरे पिलर्स को बहा के लेकर चला जाएगा, नुकसान हो गया, स्टेट का पैसा। सर अब तो कितना आ गया सर, वहां पे कितना पानी आ गया सर, 10 लाख क्यूसिक का वाटर है सर वहां पे। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कमजोर है, जरा कुछ तो मजबूत है वो कि इतना पानी ले रहा है सर। सर हो सकता है मैं गलत हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, ठीक है, और एक कमीशन में बिठा सकते हैं, हम उसको भी देख सकते हैं, जरूर। आई वेलकम दैट सर। सर डज द गवर्नमेंट वांट, सर sir, does the government want to scrap the Kaleshwaram project and revive the original Pranayita Chivadla project? Is my question, sir. Sir, when there are huge inflows of floods during the current monsoon, the barrages are full and brim without causing any concern about the stability of other structures, sir. So the government should take up the repairs and maintenance work immediately so that benefit of projects are not squandered away, sir. We agree. I agree, sir. I'm not saying that I don't agree. I agree, sir. The Kaleshwaram project may have deficiencies. And massive expenditure on the project construction may look excessive, but the project cannot be abandoned as a white elephant, sir. It cannot be abandoned, sir. And we shouldn't, sir. Sir, if the government decides to go for this option of abandoning it, then it will plunge the state into huge financial crisis, sir. As the state will have to pay through its nose to pay the interest and repay the enormous loans borrowed by KIPCL and the government for this project. This Kaleshwaram project does not consist of just 3 barrages, sir, but also comprises 15 reservoirs, 19 substations, 21 houses, 203 kilometers of tunnels, 1,531 kilometers of gravity canals, 98 kilometers of pressure main storage, capacity of 141 TMC, and utilization of 240 TMC by lifting the waters to the height of 530 meters. As per the executive summary of the Commission report, the Commission conclusion and recommendations are follows. The Commission concludes that the entire project was characterized by rampant and brazen procedure and financial irregularities. The Commission calls for a recovery of funds of 677.67 lakhs paid by WAPCOs for responsible official WAPCOs report burst on page number 638. So the Commission also called for investigation of collusion. It says, sir, the authorities and agencies are hand in gloves with each other and acted with malicious intention in pursuit to unfair and sari cheezein, sir, I don't want to go. It is there, sir. The Commission further observed the Kaleshwaram project intended as a lifeline of the state of Telangana become a colossal waste of public money due to profound failure of governance, planning, technical oversight, financial discipline driven by individual decision and undue influence of political leadership, sir. The Commission fixes the responsibility for lapse identified on them, Chief Minister and then Minister of Irrigation, then Minister for Finance, then Principal Secretary, Irrigation Department, S.K. Joshi, Additional Secretary, wo sare log, I don't want to name them, sir. So the Commission, it is there on page number 633 and 634. The Commission does not fix any responsibility on other higher officials of the government. What is the role of the then Chief Secretary, Finance Secretary and others who were monitoring authorities of state finances and administrators? Sir, एक केस होता है सर, कभी भी करप्शन का इसका उसका, सर एक 4 लोगों को पकड़ लेते हैं, मेन आदमी को पुलिस क्या करती है सर, पकड़ती है, पकड़ के बोलती है कि देखो तुम हमारे अप्रूवर बन जाओ, हमारे अप्रूवर बन गए तो तुमको सजा नहीं, सब बोल देना। तो वो आदमी फौरन साइन करता, लेटर लिखकर कर देता और अप्रूवर बन जाता है। अप्रूवर बन के पूरी क्राइम की स्टोरी बोल देता है, कौन कौन इन्वॉल्व थे, पूरे लोग जेल में चले जाते, अप्रूवर बच जाता। हाँ, यस। तो अब मुझे नहीं मालूम कि अब ये लोग अप्रूवर बन के करें, because I'm not disagreeing के वहां पे कोई घपला नहीं हुआ, I'm not disagreeing के वहां पे जो है सो कुछ बेकायदियां नहीं हुई, मैं I'm not disagreeing के कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं हुए, I'm not disagreeing के वहां पे बराबर जो ड्राइंग्स लेना था, एक्सपर्ट्स को ओपिनियन लेना था, नहीं हुआ। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूं उसके साथ साथ के कोई ना कोई अप्रूवर बन के अपने आप को बचा लिया। तो वो अप्रूवर कौन है, वो अप्रूवर कौन है, उसको भी आप लोग तलाश करिए सर। Sir, in fact, the Commission relies on the evidence of the then Finance Secretary to establish the fact that there has been a lapse on the part of the authorities to ensure
prudence of fiscal management, fiscal stability, prudent debt management, consistency of fiscal stability, and greater transparency in fiscal operations of the government. In other words, this key official involves himself on his own responsibility but turns approval against the then CM, then irrigation and then finance minister and other officials, sir. Say page number 644, sir. Aap dekh lijiye, sir. Sir, now going further ahead, sir. Among the various agencies, contractor, construction firms that executed Kaleshwaram project work, the L&T, AFCON, Navayuga and others. The commission's name, only L&T in the report, sir. सिर्फ L&T क्यों? हमारे बीजेपी वाले भी एक कॉन्ट्रैक्टर का नाम नहीं लिए. हाँ, वो उनसे भी करीब है. अब वो अलग बात है कि हमारे से करीब नहीं रहते, सर. हम बहुत छोटे हैं. वो उनका नाम नहीं लिए, सर. वो ऐसा जबरदस्त कॉन्ट्रैक्टर है, सर. वो जो भी गवर्नमेंट रहती है उनके साथ रहता है, सर. मैं जब पहले कहा, सर, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एटीएम है, मगर मैं करूंगा, सर, बोलते ना, सर, पांचों उंगलियां घी में अगर किसी के हैं तो ये इरिगेशन के कॉन्ट्रैक्टर्स के हैं, सर. क्या पैसा है, सर, क्या पैसा. ओहो सर, ये वही लोग हैं जो राजशेखर रेड्डी साहब के दौर में भी थे. ये वही लोग हैं जो केसीआर साहब के भी दौर में है. अब ये वही लोग हैं, फिर यहां भी है, सर, अभी भी है, सर, जो और सर इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी देते हैं, सर. Sir, you can see with the records that electoral bonds were given to Congress by them. Electoral bonds were given by them to BRS. Electoral bonds were given by them to BJP also. Electoral bonds were not given only to CPI and MIM, sir. Vivo, sir. So, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, sir, why is the commission sparing these contractors? Are those contractors not responsible? Are those contractors not involved in corrupt practices? Are those contractors not responsible for what is happening at Madikata? The pillar and that. Why is their name omitted from there, sir? I do not want to use the name, sir. I do not want to use the name because people watch me speaking. So I don't want to name them and give them some publicity. But these people should be checked, sir. Why are we depending on the contractors? We need not depend on these contractors, sir. Let us work for the people. Let the people vote for us. Let live for the people, work for the people, sacrifice ourselves for the people. We do not need these contractors to fund our election if we work sincerely and committed towards the people's welfare, sir. When we have some कुछ कमजोरियां रहे तो कमजोरियों को दूर करने के लिए पैसा होना पड़ता है. पैसा कॉन्ट्रैक्टर से आता है. तो वो कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम क्यों नहीं है, सर? अब ये सनत नगर का एक फ्लाईओवर भी आया, सर, हमारे पास. अरे वो फ्लाईओवर, वो इतना पैसा बढ़ गया, सर, उसका पता नहीं वो कैसा बढ़ गया. यहां से वहां तक है, छोटा है. अब वो कितने की 100-200 करोड़ हो गया उसका. समझ में नहीं आता है, सर. सर, it is very sad, sir. We talk about the corruption of politicians, but why don't we talk about the corruption of these contractors? और फिर बेचारे कॉन्ट्रैक्टर्स तो परेशान भी है, बिल्स भी नहीं मिल रहे. फाइनेंस मिनिस्टर साहब, जरा गरीब कॉन्ट्रैक्टर्स के बिल दे दो साहब. ये बड़े बड़ों के नहीं तो गरीब के दे दो, सर. छोटों के दे दो, सर. ये बड़े बड़ों के छोड़ो, सर. छोटे खुश हो जाएंगे. Sir, going further ahead, sir, the commission observes that there have been a massive cost overruns in the Kaleshwaram project 71,036, sir. Sir, तो मैं इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, सर. थोड़ा और आगे जाते हुए, सर. Sir, after fixing the responsibility of officials of irrigation department, right from the irrigation secretary to top engineer, the commission merely recommended that appropriate action in accordance with law shall be initiated against them, without specifying what this action should be. ये कैसा कमीशन है, सर? मुझे समझ में नहीं आ रहा है. सारे चीजा बोल रहा है, इन्हें चोर, इन्हें गलती करा, इन्हें कुछ करा. भाई ये कमीशन ये नहीं बोल रहा कि क्या सजा देना है. सीधा ये बुक में बोल रहा है कि आई लीव इट टू द गवर्नमेंट. और गवर्नमेंट क्या बोल रही, सर? वी विल डिसाइड इन द हाउस. मैं इस पे भी आऊंगा, सर. मैं इस पे भी आता हूं, सर. सर, the commission only recommends that the agency which executed the work shall be liable to complete all the pending work, including defect rectification work, restoration work, 7th block, Madikata barrage and their own cost. तो वो पूरे कॉन्ट्रैक्टर्स का नाम तो लेना था, कमीशन. सर, अगर ऐसे कमीशन अगर ऐसे रिपोर्ट देंगे तो एक आम आदमी कहां जाएगा? उसका भरोसा किधर जाएगा?
मैं उम्मीद करता हूं कि कमीशन के लोग सुन रहे होंगे मैं जो कह रहा हूं. The commission makes critical observation on the role of the then Chief Minister, the Irrigation Minister, who can be directly and be accountable for the irregularities and illegalities of planning construction. The Curacy Commission washes its hands on the actions to be taken against them by refusing to make any specific recommendations on them. एक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन नहीं है सर ये पूरी बुक में. सर पहले लास्ट टर्म में क्या हो गया था सर, वो बीआरएस वाले कांग्रेस के एमएलएस को भी ले लिए थे सर. तो उस वक्त वो हम आई वॉज लकी इनफ टू सिट ऑन द अपोजिशन सर. जो भी डिबेट होता था वो सबसे पहले मेरे से स्टार्ट होता था, तो मुझे टाइम नहीं मिलता था सर. नाउ थैंकफुली आई एम गेटिंग टाइम सर, कि बीआरएस बोलना है, फिर उसके बाद में बीजेपी, फिर इधर से बोलते दो लोग. जब तक टाइम मिल जाता है तो पूरा टाइम लेके पढ़ा हूं सर. सर इसमें एक भी रिकमेंडेशन नहीं है चोर को क्या सजा दी जाए, नहीं है सर. वो जो कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने धोखा दिया, अमाउंट को एक्सकेलेट किया, बढ़ाया, उनको क्या सजा, नहीं है सर. फिर क्या फायदा ऐसे कमीशंस का सर. सर सिमिलरली द कमीशन ऑल्सो रिफ्यूजेस टू रिव्यू द इंटरिम रिपोर्ट of the final report of Vigilance Informant Director in the government and says that the government is at liberty to take appropriate steps to pursuant in accordance with law. गवर्नमेंट पे छोड़ दिए सर, गवर्नमेंट पे छोड़ दी, गवर्नमेंट हाउस पे छोड़ ली. अब देखो सर क्या मजाक है, बोलिए सर. सर सीएजी के बारे में द कमीशन गोज टू रिपोर्ट 24 सीएजी and performance audit Kaleshwaram project, but refuses to review the same and says the government is at liberty to take steps pursuant to CAG report in accordance with law. Page number 645. Vigilance enforcement के लिए बोल रहे government to take appropriate steps pursuant to accordance with law. Page number 655, 656, 657. Moreover, the commission does not review the report. Now it is very important, sir. The commission does not review the report of National Dam Safety Authority and the expert committee constituted by government in May 2024 to recommend the repairs and rectification works to be taken up on barrage. You can see it on page number 658 and 62, sir. The commission said the government is at liberty to take steps pursuant to the final report of National Dam Safety Authority in accordance with the law. क्या फायदा हुआ सर? सर विजिलेंस की रिपोर्ट भी दे देना था कमीशन को, यह भी दे देना था आप नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के फाइंडिंग्स, आप उनको कैबिनेट सब कमेटी के फाइंडिंग्स दे देना था, आप एक कमेटी के जो फाइंडिंग्स है वो भी दे देना था. सब उनको दे के बोलना था सारे चीजें आपके पास है, चोर को ढूंढो, सजा बोलो, क्या देना है. दैट्स व्हाट. नहीं हुआ सर, वैसा हुआ ही नहीं, मैं कह रहा हूं सर. सर अब नाउ finally the commission says that it restrained itself from making enough. अब देखिए जुमला देखिए सर आप. Finally the commission says that it restrains itself from making any further comment with respect to the steps taken or to be taken by the state authorities pursuant to the inquiries already made by different wings of the government. देखिए सर आप कोई कमेंट नहीं करना है दूसरे विंग पे जो भी हो गया. सर अब ये लास्ट सर, इसके ऊपर सर आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं सर. सर अब हम जब यहां आए सर, सब लोग बोले गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी है, क्लीन है, सब कुछ है. अब हम हाउस के सामने रिपोर्ट रख दिए, रिपोर्ट में एटीआर नहीं है, कमीशन को पूरे चीजें नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए, और फिर क्या बोल रहे हैं, जो भी हाउस बोलेगा विल टेक एक्शन. सर द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डिड द कमीशन डू एंड व्हाट इज द एंड रिजल्ट ऑफ इट्स वर्क. आखिर कमीशन करा क्या सर, उसका एंड रिजल्ट क्या है कमीशन का. ये सर मैं इसके लिए कहूंगा सर, आई में आस्क क्यों साहब ये इंक्वायरी कमीशन जब ये नहीं कहते क्या करना. क्यों साहब ये इंक्वायरी कमीशन जब ये नहीं कहते क्या करना. सर अब मैं तकरीर कर रहा तो अभी मिनिस्टर साहब बोले अरे अकबर साहब बोलो क्या करना है. अरे भाई यही पूछना था अब कमीशन से, क्या करना, इर्रेगुलरिटीज का क्या करना, चोरों का क्या करना, उनसे पूछना था, उनसे आने देना था. अब नहीं सर,
अब उसके बाद हमको बोल रहे हमको बोलो। सर हम तो वो बेबस मजबूर और लाचार लेजिस्लेचर्स है तेलंगाना असेंबली के, जिनको ये भी नहीं मालूम कि कल असेंबली रहेगी या आज खत्म होगी। हमसे पूछो बोल रहे। आप बताओ सर, हम तो वो है जो हमको मालूम भी नहीं है कि कल आना है या नहीं, आज खत्म हो जा रही। हमसे पूछो बोल रहे सर। और सर अब आप देखिए सर मैं ये जानना चाहूंगा सर, ये लास्टली सर आई वुड लाइक टू नो द एक्शन बीइंग कंटेम्पलेटेड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट द पर्सन एजेंसीज रेस्पॉन्सिबल सर। सर इसके साथ ही साथ सर एक इंपॉर्टेंट चीज है सर। सर बहुत कंट्रीज में क्या होता सर, कभी गड़बड़ हो जाती। अब जैसा यूक्रेन में गड़बड़ हो रही है, वो रशिया का ऐसा वैसा, तो वहां पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है लेकिन इमरजेंसी सिचुएशंस ऐसा आ गए, तो वो क्या करते हैं साहब, वो पूरे पॉलिटिकल पार्टीज को लेके एक गवर्नमेंट बना लेते हैं और डिसीजन लेते हैं। सर मेरी बात खराब दिखेगी कांग्रेस के लोगों को, मिनिस्टर्स को, लेजिस्लेचर्स को। सर इलेक्शन हुआ 20 महीने पहले, 20 months back, people have voted and given the responsibility of governance to Congress, and then they have given us the responsibility of playing the role of opposition. Now the government wants the opposition to play the role of governance. क्या मैं गवर्नमेंट का हिस्सा हूं साहब? आप बताइए सर आप बताइए सर, अगर बीआरएस है, कंसेंसस कैसा आएगा सर? आप बोल रहे हैं कि नहीं सब जने मिलके बोलो, अब वो लोग एक्शन लियो बोलते, मैं एक बोलूंगा वो एक बोलेंगे वो एक बोलेंगे। अरे भाई आपको तेलंगाना की आवाम बीआरएस को रिजेक्ट करके उनको बोली कि आप जाओ, हम कांग्रेस को देते हैं गवर्न, आप करो, फैसला आप लो, चोरों को आप देखो और नाइंसाफी जो हुई उसको इंसाफ करो। लेकिन ये पलट के बोल रहे हैं कि नहीं अपोजिशन वाले आप फैसला करो। ये आवाम की तौहीन है मैं कहूंगा, जिन्होंने आप पे भरोसा किया, एतमाद किया, आपको वोट दिया और इख्तियार दिया, आपको चीफ मिनिस्टर बनाया। आपको फैसला लेने की ताकत नहीं है, आप लोगों में अहलियत नहीं है फैसला लेने की, और आप चाहते हैं कि हम आए। आप लीजिए ना, आपका फैसला है सर, आपका जरूर बोलिए सर, बोलिए, आप लीजिए फैसला। అధ్యక్ష, అక్బరుద్దీన్ గారు చెప్పినటువంటి అంశాలన్నీ విన్నాం. నిర్ణయం తీసుకో అని మేము అపోజిషన్కి ఎప్పుడు చెప్పలేదు. సభ ముందు పెట్టి మూడ్ ఆఫ్ ది హౌస్ తీసుకొని, ఎందుకనంటే అత్యంత ప్రజాస్వామ్యయుతంగా, వన్ సెకండ్ లెట్ మీ కంప్లీట్. I understand. Mood of the house also we want to take. అత్యంత ప్రజాస్వామ్యయుతంగా సభలో కమిషన్ రిపోర్ట్ పెట్టి దాని మీద అందరూ చర్చించి, ఇది మొత్తం రాష్ట్రానికి సంబంధించిన అంశం కాబట్టి, సరే ఎలాగూ ఆ రోజుల్లో ప్రభుత్వంలో ఉండి ఈ మొత్తానికి కారణమైనటువంటి టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు దానిపైన ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవడానికి ఇష్టపడకపోవచ్చు, కానీ బట్ మిగతా సభ్యులు, మిగతా రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళు మాత్రం తప్పనిసరిగా దీని మీద ఆలోచన చేసి రాష్ట్ర ప్రజల పక్షాన వారి వారి అభిప్రాయాలు కూడా చెప్తారనేటువంటి ఆలోచనతోనే సభలో పెట్టాము అధ్యక్ష. తప్పనిసరిగా అందరి అభిప్రాయాలు తీసుకొని మేము పారదర్శకంగా కక్ష సాధింపు ధోరణితో కాకుండా కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి రిపోర్ట్ బేస్ చేసుకొని సభా అభిప్రాయాలను కూడా తీసుకొని తప్పనిసరిగా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అధ్యక్ష. ఈ ప్రభుత్వం ఏం నిర్ణయాలు తీసుకోలేనటువంటి ప్రభుత్వం కాదు. 100% after taking an action we cannot ask you. After taking an action I can't ask you, no. No, I understand. See, you don't want to make any suggestions, fine. But I understand. So మా ఉద్దేశం మేము చాలా స్పష్టంగా సభలో చెప్పాము. ఇది ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన. తప్పనిసరిగా ఎవరెవరు అభిప్రాయాలు వాళ్ళు చెప్పిన తర్వాత డెఫినెట్ గా ప్రభుత్వం తీసుకోవాల్సిన చర్యలు, నిర్ణయాలు డెఫినెట్ గా తీసుకుంటుంది అధ్యక్ష. I'll just conclude in 2 minutes, sir. सर मैं फिर से यही बात दोहराऊंगा और ये कहूंगा कि बुरा मत मानिए, हुक्मरानी करने के जो तरीके हैं, जिम्मेदारी है, उसको समझिए।
मैं दोस्त बन के कह रहा हूं, इस अवाम ने आपको चीफ मिनिस्टर बनाया, आपकी पार्टी को इख्तियार दिया, आपको 5 साल तक फैसले लेने का इख्तियार दिया और आपको रूलिंग का हक दिया, मुझे अपोजिशन के लिए बिठाया, तो जिम्मेदारी आपकी है। क्या हर फैसले आप अपोजिशन से पूछ के ले रहे हैं? हर जियो हमसे पूछ के निकाल रहे हैं? हर फैसला हमसे पूछ के ले रहे हैं? हर एक चीज यहां असेंबली में लाके कर रहे हैं? देखिए, ऐसे नहीं होता है। हुकूमत आप कर रहे हैं तो आपका इख्तियार है आपको फैसले लेना। मुझे पसंद नहीं आता है तो भी नहीं आएगा, लेकिन हक तो आपका है, वो जो आवाम दी, उसको समझिएगा प्लीज। आप प्रपोज करिए कि हम ये पॉलिटिकल जो चोर हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाई करेंगे, ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स जो चोर हैं हम ये सजा देंगे, ये ऑफिसर्स जो चोर हैं हम इनको ये सजा देंगे। लेकिन आप पॉलिटिशियंस को बोल रहे हैं कि इन्हों ऐसा करे, उन्हों वैसा करे, और फ्यू ऑफिसर्स को बोल रहे हैं और कमीशन कह रही है 6 करोड़ रिकवर करो और कोई रिकमेंड नहीं करती, और आप कह रहे हैं कि अपोजिशन बोलो। ये कैसे होगा सर? आप बोलिए कि हम ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, ये करने वाले हैं, और जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका भी नाम लाइए, उनको भी सजा दीजिए। बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को क्यों छुपाते हैं? कोई नहीं बोला सर, कोई नहीं बोला सर। अगेन आई एम सेइंग सर, and those big contractors have given electoral bonds to Congress, given electoral bonds to BRS. The only party which never got, they also gave to BJP sir, BJP also. The only party जिनको नहीं मिला ये कम्युनिस्ट पार्टी, MIM पार्टी। तो अब आप बोलिए सर, व्हाई नॉट द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाई ओनली L&T सर? सर मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत सख्त से सख्त नोट लेगी, वो जो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट के ताल्लुक से आप एक वाज़ेह बात कह दीजिए। क्या आर यू गोइंग टू स्क्रैप दिस प्रोजेक्ट? आर यू गोइंग टू स्टॉप दिस प्रोजेक्ट? Are you going to let go this project, or you are going to continue this project? Kindly give an answer, sir. That is very important, sir. I thank you very much for giving me this opportunity, sir. Thank you so much. Speaker, sir. MIM floor leader अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कुछ चीजें ये इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट में जो लिखा है, सरकार ये रिपोर्ट जो टेबल किए, जो चर्चा के लिए हम मौका दिए, उन्हें समझने में कुछ गलतफहमी हो गए। क्योंकि मैं सुन रहा था अकबर साहब कुछ सुझाव देंगे, हम लोग सुनकर सबका सोच क्या है, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा ये तेलंगाना आंदोलन, तेलंगाना राज्य ने हासिल किया पानी के वजह से। ये पानी सोने से भी बहुत कीमती है तेलंगाना में। वो पानी के नाम पे जिसने लूटा है इस राज्य को, 1 लाख करोड़ रुपए जिसने लूटा है, उसके बारे में चर्चा होने के बाद हुकूमत कैसे चलाना, हुकूमत ला लिए हमको और कांग्रेस पार्टी को कहीं से सीखने का कोई जरूरत नहीं है। हम इतना प्लेटफॉर्म इसीलिए दिए, सबसे चर्चा करें, सबके सुझाव लेके सरकार एक निर्णय लेने के लिए हम चर्चा पे रखे। निर्णय आप लेने के लिए टेबल नहीं किए ये पूरा कमीशन रिपोर्ट। वी हैव टोल्ड, वी हैव गिवन assurance to 4 crore Telangana people, saying that we have told at the time of election, we wanted to appoint a sitting judge inquiry on this Medigadda Annaram Sundilla barrages. We have requested to Telangana High Court to spare one sitting High Court judge. They have refused to appoint a High Court judge. They don't want to spare any High Court judge. Then they have given a suggestion, why don't you take a retired justice? Then Congress party, government of Telangana has appointed a senior most Supreme Court judge, Pinaki Chandra Ghosh. He has worked combined Andhra Pradesh Chief Justice. He has worked
Supreme Court judge. He has worked in Calcutta High Court. Same time, he has worked first Lokpal Commission chairman. So his integrity, he has addressed Shashikala case, Jayalalitha case. He has given many judgments. Then we have appointed one-man commission, PC Ghosh Commission. He has taken almost 1.5 years time. He has examined everything. अकबर साहब ने ये कह रहा है कि एनडीएसए रिपोर्ट आप नहीं दिए, विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट रिपोर्ट आप नहीं दिए, कार्ड रिपोर्ट आप नहीं दिए, फिर पीसी घोष ने कहां से ये पूरा लेकर कहां से वो रिपोर्ट लिखेगा? सर, Sir, we have given everything. So that is what I wanted to correct you records. Sir, he has referred everything. NDSA report, he has referred vigilance and enforcement report. You go through this. See, Akbar साहब, ये आप पूरा पढ़ो. 600 साहब, नहीं. आपको मैं पेज वाइज दिखाता हूं. He has gone through everything. No, you are absolutely wrong, Akbar साहब. नहीं, आप नहीं, हम सरकार चला रहे, हमें पता है. We have no. You go through this page. You go through the 600 and I will give you. नहीं, अरे साहब ये बुक ले लो, सेकंड बुक ले लो. सर आप पूरा देखो, एनडीएसए रिपोर्ट. अकबर साहब पूरा पढ़ो, बिना पढ़े आप मत बोलो. नो. अकबर साहब, कभी कभी हम इंसान हैं, कोई भी गलतफहमी हो सकता है. आप मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा अच्छा दोस्त, ये इसका मतलब ये नहीं है आप विदाउट वेरीफाइंग दिस रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट यू कैनॉट मेक सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स. So let me complete. I'm not yielding, Akbar sahab. I'm not yielding. No. You are scolding like anything. I'm sorry. Absolutely, I'm sorry. I'm not going to yield. You have taken much more than 1 hour. No. आप बुक किताब कुछ भी पढ़ो, मगर गलत नहीं बोल सकते आप. नहीं, आप गलत नहीं बोल सकते. आप अगर वो सचमुच रहा तो सर, I have to answer. I'm the floor. I'm the leader of the house. I have to answer every question. I have to address every member. I have to reply. No. You cannot. Huh? This is what it is saying. Page number 664. Akbar Sahab, 656 page number, you go through that page. The Director General, Vigilance and Enforcement submitted interim report on 2/8/2024 and further informed the government through letter dated 38/2/2024 that as directed by the government, it is restricting its inquiry to Medgada barrage only through letter so and so date has placed before. साहब, अकबर साहब, अब हम इंसान है, गलत हो सकता है. आप अरे मैं आपको विथ रेफरेंस पेज नंबर, आई एम कोटिंग पेज नंबर. द कमीशन, द फाइनल रिपोर्ट, डायरेक्टर जनरल विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट, Medgada barrage. The government has produced a document mentioned in the list annexed to this said letter. However, it is reported through the said letter that the placement registers of work pertaining to all components. Dam safety report also is there. अरे साहब, अकबर साहब, आप गलत फहमी होगा, नहीं तो झूठ बोलने वाले अगल बगल में बैठकर आपको रिक्वेस्ट किए तो मोहब्बत में, प्यार में, ऐसा कुछ पुराने दोस्ती में कुछ गलत फहमी में मत जाओ. आई एम कोटिंग 658 पेज नंबर. You take that book, report. We have given hard copy to Akbaruddin Owaisi sahab. आप काप ले लो. Report of the National Dam Safety Authority. Before dealing with the report of the National Dam Safety Authority, it is necessary to refer to the directions of this commission. Sri G. Anil Kumar, Engineering Chief General, wrote letter so and so
Committee on 2024 dated 3/6/2024 enclosing therewith interim technical suggestions on the rectification works related to the barrages of the Kaleshwaram lift irrigation project based on the site visit observations on 1/6/2024 by expert committee constituted wide government memo so and so so and so. The letter reads thus, anent to the reference second cited, and he has given everything. The report includes to the said letter reads thus. साहब आप पूरा रिपोर्ट पढ़ो. साहब मैं बोल रहा हूं, मेरा सरकार ने सबमिट किया. NDSA report we have given to commission. NDSA report we have given. Vigilance and enforcement report to the commission. And CAG report I have submitted. Officially we have submitted. Page. साहब मैं पढ़ के दिखा रहा हूं, मैं आपको झूठ बोलने का. सर अकबर जी, जस्ट आई विल रीड आउट. अकबर जी प्लीज आप बैठिए. लीडर ऑफ हाउस की बात करने के बाद आपको टाइम देता हूं, बैठिए आप. अकबर साहब आप 1 घंटा बोले तो भी हम कुछ नहीं बोले. 60-70 मिनट आप वन साइड आप जो बोलना था आप बोल दिया, हम कुछ नहीं बोले. मगर जो फैक्ट्स को आप गलत दिखाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता. क्योंकि पेज नंबर 646 report of the Comptroller Auditor General of India. This report is prepared for submission to the Governor under Article 151 of the Constitution of India for being laid before legislature of the state. The preface to report 1 of 2024 read thus. This report pertaining to the state of Telangana has been prepared for submission to the Governor under Article 151 of the Constitution of India for being laid before legislature of the state. There is a complete report is there. I don't want to waste your time. So I would request, you have to understand, this report is comprehensively the commission has submitted. This is inquiry commission. He has not adjudicated, he is not judge of this case. He is the commission, say one-man commission. This is the inquiry commission. It is appointed under inquiry commission. He has recommended everything, he has taken into consideration. Every report, NDSA report, Vigilance and Enforcement Department has submitted everything to the commission. Not only that, they have called civil society, they have called experts, they have called everyone. They have taken into consideration everyone's report plea. So my point is that the commission has recommended certain things. They have found fault with political executives, executive officers, technical experts and agencies. Finally, he has said that recovery certain amounts, take action against to some of the agencies and put some criminal cases. Who has misled the commission? They have suppressed certain facts. Based on that suppression of certain facts, he has given direction to take criminal action against those people. The entire report is here. Now my government is tabled this report. We are asking your suggestions, not your decision. If you wanted to suggest, you can suggest. If you are not going to suggest also, we don't mind. Government is going to take a decision on this report. We will take a stringent action against all these corrupt people. I am going to take a decision. I am here to take a decision. I am not here to sitting just like that. I am the leader of the house. I know how to run the house. I know how to take a decisions in appropriate time. Thank you, Akbar Sahab. Honorable Speaker, sir. Sir, I do not feel offended, nor I feel upset, nor I get angry as my leader of the house, who got so angry. Hey, theek hai. I was laughing and I was speaking. Sir, Honorable Speaker, sir. Sir, I would like to refer to the page number. Honorable Speaker, sir, through you, I request the learned people
of the learned government headed by a learned leader, Mr. Revant Reddy Sahab. Sir, about report of the Director General Vigilance and Enforcement, page number 655, sir. Sir, in that second paragraph, page 655, it is reported by the government to this commission that the Vigilance and Enforcement Director seized the records pertaining to Madigadda, Anaram and Sundila barrage. Right, sir? Yes. Now, going to the next page, sir. Sir, it is restricted its inquiry to Madigara barrage only, it says. Go to page number 667, sir. In the above facts and circumstances, this commission, now listen, last paragraph, page number 657. In the above fact and circumstances, the commission does not prefer to review the interim report and the final report submitted by the Vigilance and Enforcement Directorate of the Government of Telangana. The government is at liberty to take appropriate steps pursuant to the said report in accordance with the law. Sir, now what? Sir, no, sir, you're not understanding. You're not understanding what am I saying. Sir, you ask for suggestions to be given. If I am wrong, you please correct me. I have given a suggestion stating that as per my research and my reading and my understanding, it is understood that the vigilance report was not commented by the commission, stating that in the term of references, they are not being set to study the vigilance report. So, and अगेन नो अकबर साहब, जब हम कमीशन अपॉइंट किए, एक मिनट नहीं, आप एक के ऊपर आप ऐसे बोलते गए ना, लोग मेरा इंटीग्रिटी को भी चेक करने के लिए मौका मिलेंगे. I have appointed this commission, GOMS number 6, dated 14/3/2024. मेरा सरकार बने December 7, 2023. Within 2.5 months, I have appointed this commission. Vigilance and enforcement तब तक कोई रिपोर्ट नहीं दिए. उसके बाद विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट कमीशन रिपोर्ट दिए. उसके बाद वो रिपोर्ट हम कमीशन को भेज दिए. जिस दिन हम अपॉइंटमेंट किए, विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट का रिपोर्ट ही नहीं है. मैं कैसा इस जीओ में TOR में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में मैं कैसा लिखूं? हाउ कम यू आर एक्सपेक्टिंग दैट वी हैव टू इंक्लूड एवरीथिंग इन दिस जीओ? अरे सही साहब, आप क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? आप नो अकबर साहब, आप मेरा दोस्त है, आप लिबर्टी ले सकते, मजाक भी कर सकते मेरे से, मगर सरकार से मजाक नहीं कर सकते. ये ठीक नहीं है. अरे आप रिजाइन किए तो क्या भाई? आप रिजाइन किए तो मुझे क्या मिलना? मेरा अच्छा दोस्त है, हाउस में रहना है. नहीं, आपके एक्सपीरियंस में लेना चाहता हूं. नहीं, अकबर साहब, आपके यू आर 6th टाइम MLA, यू आर सीनियर मोस्ट MLA इन दिस हाउस. I need your experience. I need your support. No. Please, Akbar Saab, I'm coming on record again. Time and again, I'm on record. Government submitted vigilance and enforcement report to Commission of Inquiry officially. I have submitted officially vigilance and enforcement report as well NDSA report. आप मेरा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देके एक्नॉलेजमेंट लिए भाई मैं जो काम किया, मेरा हाथ से काम किए, आप नहीं बोल रहे. मैं क्या बोलूं आपको? मैं क्या बोलूं? आप ऐसा बोले तो मैं भाई आप अकबर साहब, ये जीवो कब दिया? मैं विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट रिपोर्ट कब दिया? वो दे दो साहब. अकबर साहब, आप समझ रहे नहीं. जिस दिन हम लोग ये कमीशन ऑफ इंक्वायरीज डाला, उस दिन विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट रिपोर्ट नहीं थे. 18 महीने इंक्वायरी होने के बाद NDSA फाइनल रिपोर्ट आ गए. विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट
फाइनल रिपोर्ट आ गए, सब हम लोग कमीशन को सबमिट किए। उसके बाद ही केसीआर को बुलाया, हरीश को बुलाया, बाकी लोगों को बुलाया, सबका सुझाव लिए, सबका सुना, अपना खुद का गाना गा दिए कमीशन। हम भी यही काम करना चाह रहे, सबका सुनने का है। हमारे गाना हम गाने वाले, अब गाने के लिए मौका ही नहीं दिया, आप सीधा सीधा घुस के मार दे रहे, इधर उधर गोली चला रहे। भाई ऐसा मत करो अकबर साहब। नहीं, किसी का नहीं, you are learned, Akbar Saab, you are learned senior most member. If first timers say something, I can understand. But I'm not expecting from you such type of, I'm sorry. नहीं, ये आपके तरफ से ये नहीं सुनना चाहता हूं मैं, क्योंकि ये हाउस में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कंटिन्यूअसली 1999 से लेकर आज तक यू आर द विटनेस ऑफ दिस हाउस। चंद्रबाबू नायडू, राजशेखर रेड्डी, रोसయ్య, किरण कुमार रेड्डी, चंद्रशेखर राव, today Revant Reddy. All these years you have seen everyone. You can, if you are saying something, people will believe. क्योंकि अकबर साहब जो बोलते 100% सही बोलने वाला है, क्योंकि वो पढ़े लिख के पूरा समझ के बोलते, एक्सपीरियंस से बोलते। मैं भी यही समझते थे, मगर पहली बार मुझे गलत प्रूव कर दिया। आप मुझे गलत प्रूव मत करो अकबर साहब, मैं आपके ऊपर बहुत उम्मीद है, बहुत भरोसा है। मैं इसमें आप जो भी अपोजिशन जो भी सुझाव देंगे हम सुनेंगे, हम डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेने का अथॉरिटी मेरा है। आई विल गिव यू। भाई अभी इसमें गए तो आप उसमें जा रहे हैं। Sir, Honorable Speaker, sir, this is the book tabled in the House, sir, by Honorable Irrigation Minister Saab. Chief Minister Saab बोल रहे हैं कि he didn't expect from me कि I am wrong, he's saying. ठीक है, I don't mind, sir. Individuals are not important. State and the people are more important. I mean, hundreds and thousands like Akbar Owaisi can be sacrificed for the state, give their life for the people, and I have done it also. Sir, now, in this book, page number 32, sir, the Commission of Inquiry, if I am wrong, I may be corrected. Commission of Inquiry, government-wide GOMS number 6, dated 14/03/24, has appointed Honorable Justice Sri Pinaka Chandra Ghosh, former Judge of Supreme Court of India, to conduct an inquiry on certain allegations and irregularities and embezzlement of public fund by corrupt practices in construction of barrage at Maddigada, Anaram, Sundila, Kaleshwaram project. The same was notified in Extraordinary Gazette on 14/3/2024. The term of references, Gazette dated 14/03/2024, listed below have been issued with the clear intent of identifying the various lacunas, deficiencies, wrongdoing, corrupt and malified practices, if any, and to identify the guilty parties and perpetrators who caused such huge loss to the public exchequer. To inquiry into the negligence, irregularities, lacuna in planning, designing and construction of Maddigada, Anaram, Sundila barrage. To inquire into the manner of award of execution of contract, including but not limited to deviation in contract and following the strict financial disciplines of execution of such contracts. To inquire into negligence of lacuna in operation of maintenance of 3 barrages by agencies concerned in the department, thereby leading to major damages of structure. To inquire into quality control of monitoring aspect, negligence and other malpractice agency, contractors and department. To inquire, identify and fix up responsibilities for any authority official who's extended undue favors in agencies, contractors in term allowing unjustified EOTs, extension time, wrong completion of work certificate, premature release of bank guarantees and such other matter. The Commission shall fix responsibilities for the lapses as identified by it during its inquiry into the above matters and financial implications or lapses as identified any other matter that might be referred by the government at the later date. Now, sir, last point says, any other matter that might be referred by the government at the later date. So, I just want to know, have you referred any other matter in the later date which I as a legislature is not aware? Is one question. Sir, second, I am once again reiterating my
claim and saying that the commission did not take into consideration the CAG report, vigilance report, NDSA report and expert committee report. It clearly said in this report that it is not in its terms of references. And now when we have to go, I have said about vigilance. Sir, I have said about the vigilance, sir. इसमें clear लिखा हुआ है, sir. In the above fact and circumstances, the commission does not prefer to review the interim and final report submitted by the Vigilance and Enforcement Directorate of the Government of Telangana. The government is at liberty to take the appropriate steps. Then, it is there, the report of National Dam Security, sir. National Dam Security, sir, there also, on page number, again 662, sir. It is saying, sir, it is evident from the orders of this commission referred to above, it is abundantly clear that the commission has not directed or empowered the expert committee to take up or issue direction towards repair, rectification, barrage. Therefore, the government has reconstituted the expert committee containing the 4 experts in the field of reconstituting the expert committee, later filed its interim report. ये सब बोलते हुए सर फिर बोल रहे हैं सर लास्ट में नेक्स्ट पेज में 664. I fail to understand. In that they are saying the National Dam Safety Authority is an expert body and its final report is the outcome of technical study and examination. Commission does not, अब आप देखिए सर, the commission does not wish to review the same. The government is at liberty to take steps to pursuant to the final report of National Dam Security as suggested by it in accordance with law. सर मैं ये बोल रहा हूं सर, आप जितना भी चर्चा करो, स्पीकर साहब आप जितना भी समय दो, मेरे कोई एतराज नहीं है. आपको चर्चा अगला दिन तक भी करना है, कल रात तक भी ऐसी चलाना है, आपके मर्जी. आप यू आर एम्पावर टू रन द हाउस. आप अकबर साहब मेरा रिक्वेस्ट इतना है, अकबर साहब 3/4/2025 government has submitted vigilance and enforce report to the commission. हम लोग विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट रिपोर्ट, एनडीएसए रिपोर्ट, कैग रिपोर्ट हम लोग कमीशन को दे दिए. कमीशन ने वो रिपोर्ट को कैसे लिए, कैसे स्टडी किए, वो रिपोर्ट को कहां इस्तेमाल किए, कहां नहीं किए, हम उनको डायरेक्शन नहीं दे सकते. सरकार जिम्मेदारी से नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो इंटरिम रिपोर्ट, जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट किए, वो भी हम कमीशन को दिए. विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट प्रिलिमिनरी रिपोर्ट एंड फाइनल रिपोर्ट दिए, वो भी हम कमीशन को दे दिए. कैग जो रिपोर्ट दिए वो भी हम कमीशन को दे दिए. मगर कमीशन ने वो रिपोर्ट को कैसे इस्तेमाल किए, कैसे नहीं किए, वो बात अलग है. अगर आप बोलो सरकार नहीं दिए बोल के मत बोलो सब. इसीलिए ये टेबल में रख के अगर जो कमीशन कुछ किए नहीं किए, फर्दर क्या करना, इसीलिए आप इतना एक्सपर्ट है, इसीलिए आपको हम पूछे, हम जिम्मेदारी से आपसे सुझाव मांगे तो आप मुझे गाली दे रहे. मुझे क्यों सजेशन नहीं दे रहे साहब, आप गाली दे रहे. सजेशन दिए तो मैं इतना जल्दी रूम से क्यों भाग के आता हूं. इसीलिए यहां पर जो लैप्सेस है अकबर साहब, यहां पर जो लैप्सेस है, इसीलिए वी वांटेड टू टेक एक्शन फर्दर. यू सजेस्ट मी what do you want exactly, what is your suggestion out of your experience. Even NDSA report was given to commissioner on 10th April 2025. We have given everything. बाबा हम लोग झूठ बोलने का कोई नहीं है, क्योंकि हम लोग खुद ने इंक्वायरी कमीशन डाला. हम रिपोर्ट क्यों नहीं देंगे, आप बोलो. छुपाने का हमारे लिए क्या है. कमीशन को किसी ने गलत रास्ते से लेके जाने के लिए बहुत कोशिश किए. मुख्यमंत्री जी गया, पिछले मुख्यमंत्री, इरिगेशन मिनिस्टर गए. मैं आपको यहां पर एक बात मैं बोलना चाहता हूं कि ये लोग कैसे हैं, कैसे लोगों को गलत रास्ते में ले जाने के लिए कोशिश कर रहे. मैं एक बोलता हूं अकबर साहब, जब इन लोगों का एलिगेशन क्या है,
अभी जो कोर्ट को गया ना केसीआर साहब और हरीश राव साहब ने, हमको 8B and 8C స్పీకర్ సార్, కేసీఆర్ గారు హరీష్ రావు గారు అండర్ సెక్షన్ 8B 8Cలో మాకు నోటీస్ ఇవ్వలేదు, మాకు అవకాశం ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ మొత్తం రిపోర్ట్ చెల్లదని కోర్టుకు వెళ్ళారు. సేమ్ ఇదే చంద్రశేఖరరావు గారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ వన్ మోర్ కమిషన్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇష్యూడ్ GOMS నెంబర్ 9 ఎనర్జీ డేటెడ్ 14/3/2024 appointing Justice L. Narasimha Reddy, retired Chief Justice of Patna High Court, as Commission of Inquiry to inquire into the irregularities relating to procurement of power from Chhattisgarh by Telangana Discoms and construction of thermal power plants, Bhadradri at Manuguru and Yadadri. On 24th June 2024, K. Chandrasekhar filed writ petition number 16588/2024 in the Honorable High Court for the State of Telangana. Respondents in the WP were the State of Telangana, the Commission of Inquiry, Justice L. Narasimha Reddy. What is their prayer? The issuance of letter dated 19/6/2024 directing the petitioners to appear before the second respondent to produce evidence against the witness, etc., by exercising power under Section 8B and Section 8C of the Act as arbitrary, illegal, ultra-virus, and also contrary to the provisions of the Act 1952. By a judgment and order dated 1st July 2024, the Honorable High Court was pleased to dismiss the writ petition. Filing agreed by the dismissal of the writ petition, filed SLP bearing number 14727 of 2024 before Honorable Supreme Court of India. Justice Narasimha Reddy communicated to the Supreme Court that he does not intend to continue as one-man commission of inquiry. ఈ రోజు ఈ కాళేశ్వరం ఎంక్వైరీ మీద PC ఘోష్ మాకు అండర్ సెక్షన్ 8B 8C నోటీస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ కమిషన్ రిపోర్ట్ చెల్లదని ఇప్పుడు వేసారు. ఇంతకంటే ముందు విద్యుత్ కొనుగోళ్లు, విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే సంస్థల నిర్మాణానికి కమిషన్ వేస్తే 8B 8Cలో మాకు నోటీస్ ఇచ్చింది కాబట్టి ఇది చెల్లదని కోర్టుకు పోయింది అధ్యక్ష. జస్టిస్ ఎల్ నరసింహారెడ్డి తెలంగాణ సమాజంలో గొప్ప వ్యక్తి, నికార్సైన వ్యక్తి, తెలంగాణ బిడ్డ, తెలంగాణ హైకోర్టు జడ్జిగా ఉండుకుంటూ తెలంగాణ ఉద్యమానికి ప్రత్యక్షంగా మద్దతు పలికి శ్రీకృష్ణ కమిషన్ ఇచ్చిన రిపోర్ట్లో సీక్రెట్ డాక్యుమెంట్ సెక్షన్ 8 కింద ఇస్తే ఆ రిపోర్ట్ మొత్తం బయటపెట్టి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇవ్వాల్సిందని హైకోర్టు జడ్జిగా వాదించి తెలంగాణకు అనుకూలంగా నిలబడ్డ జస్టిస్ నరసింహారెడ్డిని ఒక తెలంగాణ వాదిని కమిషన్ ఎంక్వైరీ మీద వేస్తే అతను ఉండడానికి వీల్లేదు, అతను 8B 8C కింద నోటీస్ ఇస్తే ఇది చెల్లదు అని హైకోర్టుకు పోయినారు, కొట్టేసిండ్రు, సుప్రీంకోర్టుకు పోయినారు. అప్పుడు జస్టిస్ నరసింహారెడ్డి గారు నేను ఈ కమిషన్లో కొనసాగనని చెప్పి వారు ఈ కమిషన్ నుంచి తప్పుకున్నారు. ఈరోజు నేను తమ ద్వారా అడుగుతున్న అధ్యక్ష, 8B 8C ప్రకారం కమిషన్ నోటీస్ ఇస్తే అది చెల్లదని హైకోర్టుకు పోయినారు. ఇవాళ PC ఘోష్ 8B 8Cలో మాకు నోటీస్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ రిపోర్ట్ చెల్లదని కోర్టుకు పోయినారు. ఏది చేసినా తప్పు అని తప్పు పట్టించి తప్పించుకోవాలని చూస్తున్న వాళ్ళ తరఫున ఎవరు వకాలతో పుచ్చుకున్నా ఈ తెలంగాణ సమాజానికి నష్టం జరుగుద్ది. అందుకే నేను ఈ ఫర్దర్ ఇంకా డీటెయిల్ డిస్కషన్ ఎంతసేపైనా డిస్కషన్ చేస్తా అధ్యక్ష. అక్బర్ గారికి ఎంత ఎనర్జీ ఉందో అంత లేకపోయినా కనీసం వారు అడిగిన ప్రశ్నలకు, వారు లేవనెత్తిన సవాళ్లకు సమాధానం చెప్పే శక్తి అయితే నాకుంది అధ్యక్ష. मैं अकबर साहब को एक ही गुजारिश करना चाहता हूं, जितने भी सवाल उठाओ, मगर मेरा ऐसा ताकत है हर किसी को आप जवाब देने के लिए कोशिश करता हूं. अगर आपको पसंद है, पसंद नहीं है, आपको कैसे लेना है आपकी मर्जी. तो इसीलिए मैं आपको आउट ऑफ योर एक्सपीरियंस एज ए सीनियर मोस्ट लेजिस्लेटर यू सजेस्ट मी, ये सरकार के लिए कुछ सुझाव दो, कैसे आगे जाएंगे, ये कैसे इंक्वायरी डालेंगे, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम डालना है, CBCID डालना है, नहीं तो ED इंक्वायरी डालना है, इनकम टैक्स को बोलना है, CBI को बोलना है, और कुछ आपके एक्सपीरियंस से, और कुछ हम सब हो गए, NDA से हो गए,
का विजिलेंस एंड एनफोर्समेंट भी हो गए, काग रिपोर्ट हो गए, कमीशन इंक्वायरी भी रिपोर्ट दे दिए। अब आगे क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एंड रिकवरी के लिए वी हैव टू फाइंड आउट ए वे फॉरवर्ड। आप अगर मदद अगर देना है तो दो, नहीं भाई हम नहीं देते, अब जो करना है करो बोले तो कैसे भी सरकार करने के लिए आधी रात तक कुछ कम 12 बज रहे क्यों बैठे? आज फैसला करेंगे, बिना फैसला हम इधर से नहीं जाएंगे। स्पीकर साहब, फैसला करने के लिए फैसला मैं कर लिया, मैं फैसला करूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं, मगर उसके लिए भी एक तरीका से अगर समुद्र में डालना है तो भी गिन के डालो बोल के बड़े लोग बोले। किसी को समुद्र पे या कुछ चीजों को समुद्र में भी फेंकना है तो भी गिन के फेंको, कम से कम क्या कितना समुद्र में फेंक दिए, कितना हिसाब तो भी होना है। तो इसीलिए हम लोग ये चर्चा कर रहे, सबको पता लगना कैसे लूट लिए पब्लिक सेंटिमेंट को। ये पब्लिक सेंटिमेंट उनके लिए कितना महंगा निजाम, सरकार जितना अमीर थे दुनिया में, एक दिन दुनिया में सबसे बड़ा अमीर निजाम सरकार थे, अभी निजाम सरकार को भी पार कर दे के उससे बड़ा अमीर, अदानी अंबानी से भी बड़ा अमीर बनने के लिए जो पिछले सरकार ने कोशिश किया वो उसको नाकामयाब होंगे, कामयाब नहीं होने देंगे सर, स्पीकर सर। इसीलिए हम लोग यहां बैठे, हम फैसला करके यहां से हम निकलेंगे। प्लीज 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 प्लीज, मैं अब चलते रहता। Honorable Speaker, sir, in the heat of the moment, Honorable Chief Minister might have not understood what I was trying to say. Sir, I once again, I'm not saying, we are not saying that you haven't given anything. What I'm saying is that the Commission did not review the CAG report, Vigilance report, NSDA report, Expert Committee report, saying that it is not in their terms of reference. In spite of you giving it, they never reviewed it. In spite of you submitting it. And in this report, what you have submitted is not there. What I am saying is that these report, I am not saying that these reports were not shared. You shared. But they didn't study these reports. So now my suggestion is that, we can have some experts to see that this Ghosh report and the vigilance report and the COG report and the other reports can be incorporated together and a strict action can be taken against all those corrupt people. Let it be big, let it be small, let it be chief minister, let it be any minister, ex-minister. This is what I am saying. You have submitted it, but they haven't. They said that it is not in their purview. So isliye aur ek cheez sir, now that when you want us to give a suggestion, sir, I do not have the vigilance report. I have the CAG report. I don't have the expert committee report, nor I have the other report. Sir, I need the copy, then I can give you a suggestion. But only one thing I would say, state का पैसा है, गरीबों का पैसा है, वो पैसे को जिसने भी लूटा है, उसको सजा देनी चाहिए। चाहे वो लीडर कितना भी बड़ा क्यों ना होने दो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर कितना बड़ा क्यों ना होने दो। ये लूटम लाठी की वजह से आज हमारे स्टूडेंट्स परेशान हैं, हमारे किसान परेशान हैं, आरोग्यश्री में बीमार जो बच्चे हैं वो लोग परेशान हैं। तो हमको इन लोगों की लूट जिन्होंने मचाई है सजा देनी चाहिए। दीजिए आप। श्री कुनामने जी सामशिवराम। థ్యాంక్ యూ సార్. ఈరోజు జరిగినటువంటి చర్చల్లో అంతా హీటెడ్గా జరిగినటువంటి ఈ డిస్కషన్లో अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।